India, good evening. This is the News Hour agenda. My name is Pranesh. After Congress's stunning victory in Karnataka, now demands are being made to honor promises made up before the elections. One of the promises made by the Congress party in its manifesto was that it will take decisive action against organizations like Bajrang Dal. The manifesto said such organizations which were spreading hate and enmity will not be allowed to violate constitution. Now, Jamiat Ulema-e-Hind President Arshad Madani has asked Congress to walk the talk, ban the organization in Karnataka if it wants the support of Muslims ahead of the 2024 elections. लचकदार पॉलिसी नहीं, बल्कि वो पॉलिसी लाओ जिसको इस इलेक्शन के अंदर अपनाया है। कहते हो कि बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाओ, अपने मैनिफेस्टो को जिंदा करके दिखलाओ। जिंदा करोगे तो कल जो वादा करोगे कौम उस वादे को कबूल करेगी, नहीं करोगे कबूल नहीं करेगी। Madani's demand has sparked a flurry of political reactions, but the Congress party appears to lack a clear stand on the matter. While Sandeep Dixit said banning was just not an option, other party leaders stated that the leadership will decide on the matter, so the Congress not ruling it out. I think Mr. Madani is jumping the gun. I don't think he's read the manifesto. You know, with the due respect, he may be a cleric of a particular religion, but I don't think he really reads things. The manifesto was very clear. It said that there will be zero tolerance for hate speech, for divisive politics, for organizations that tend to divide agencies like Bajrang Dal and PFI. And the government of the state, once we become the government, will take all necessary steps, including, if necessary, banning. Banning is not the only option. So I think Mr. Madani, rather than jumping the gun, and I know Mr. Madani has been a kind of a agent of non-Congress parties for a very long period of time. I don't do any kind of politics regarding communal things. My party will take a call on all these things. चर्चा करेंगे उसके बाद, इतना जरूरत नहीं है इमीडिएटली, जो उसका आगे पीछे क्या है चर्चा करेंगे, जल्दबाजी तो नहीं है। Charcha karenge, says Satish Jarkioli. Madani's remark also drew sharp reactions from the BJP leaders. Union Minister Giriraj Singh, in a stinging counter, said that today's generation is suffering from the mistake that was committed 70 years ago. Other BJP leaders fumed at Madani, strongly dismissing the parallel being drawn between Bajrang Dal and organizations like the PFI. Sample this. देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। मदनी साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ट्रस्टेड साथी रहे हैं, और मुझे तो लगा था कि इन्होंने वादा किया था कि साहब मोहब्बत की दुकान खोलेंगे कर्नाटक चुनाव के बाद, तो मोहब्बत की दुकान में तो नफरत का सामान दिखाई पड़ रहा है आजकल। और जो लोग अब बजरंग दल जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठनों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो उन पर अब सियासी सुरक्षा कवच पहनाने की षड्यंत्र साजिश करते हैं। वो बजरंग दल की बैन की बात करें, कभी उन्होंने पीएफआई के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, और मैं चाहूंगा कभी वह मुझसे संपर्क कर ले, मैं उनको ले चलता हूं, बताता हूं बजरंग दल किस प्रकार की राष्ट्रवादी गतिविधियां करता है। वो कोई देश विरोधी काम नहीं करता, इसलिए ये कहना कि आपने पहले प्रतिबंध नहीं रखा, ये ठीक नहीं है। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Let's open this up quickly. Sanju Verma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party; Vinod Bansal, the national spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad; Asif Suhail, political analyst; Atikur Rahman, Islamic scholar; and Lokesh Jindal, leader of the Congress. Ratan Sharda completes the panel. Good evening to all of you. Lokesh Jindal, I'm sure you heard every word uttered by Mr. Madani. वो ये कह रहे हैं कि 2024 में if you want support, तो 2023 का जो प्रॉमिस है उस पर डिलीवर कीजिए। When are you banning Bajrang Dal? When Congress stated that it shall not tolerate
any form of communal outfit carrying out its communal propaganda. It is very serious about it. It's a strong message that is given that all organizations, be it PFI, be it Bajrang Dal, or any organization in that particular manner, if it resorts to any form of communal propaganda, the state machinery shall not... No, why PFI or Bajrang Dal? For then by this logic, if an organization resorts to some propaganda, then name all the political parties also. Tomorrow if the Congress resorts to this, ban Congress. BJP resorts to this, ban BJP. Ban the left. But the manifesto said Bajrang Dal. Pranesh, there are laws that are available. There are stringent laws like UAPA. There are also various other legal mechanisms available which will be put into effect in Karnataka. We will not allow any form of a soft treatment to any communal outfit, just considering that it is some form of a politically affiliated organization. The message is very clear that the government is pro-people. It won't let any organization bring about social discord or communally divide the society. This is not about any organization, Mr. Jindal. Don't beat around the bush. This is about Bajrang Dal. I'm not beating around the bush at all. In fact, if any organization in Karnataka tries to bring about any form of social unrest, that will not be tolerated by the state. You've just compared Bajrang Dal to PFI. Clearly. Bajrang Dal, if you talk about even the Facebook, even the Wall Street Journal recently, it has pointed out that the reason why Facebook is not acting against Bajrang Dal. No, so Wall Street Journal and Facebook will decide the Congress manifesto or the contents of the Facebook manifesto. Sanju Verma wants to come in. Before I bring in Mr. Bansal, Sanju Verma coming in. You know, Pranesh, thankfully today Lokesh is there on your show. But I remember a couple of weeks back, I heard one of the other unofficial spokespersons, Kapil Madan, who's not here on the panel today, clearly telling you that the first thing they will do after winning elections in Karnataka is to ban the Bajrang Dal. Now the problem with Congress is they have so many official and unofficial spokespersons. Some play the good cop, some play the bad cop, and they are great at confusing the entire country with this narrative. But let me come back to some of the key points. Are you talking about the comment made by Lokesh Jindal on result day? Is that what you are referring to? No, I'm talking specifically of a comment made by Kapil Madan on your show, who also says he's a Congress spokesperson for whatever it is worth. You know, now let me come to the moot point. You know, Lokesh made a very interesting point, and on that I agree with him. You know, there is no room for hate speech. We all believe in social harmony. We are educated people, and that is exactly what you know, the narrative should be. But look at the hypocrisy. If you remember Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, where he kept repeating, "Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan kholne aaya hu." Yes. I remember the Catholic pastor George Ponaiya, whom Rahul Gandhi spent you know, luxurious time with. Let me quote his exact statement. The statement by George Ponaiya, in the presence of Rahul Gandhi, with Rahul Gandhi applauding it and no senior Congress leader condemning the absolutely horrific statement by George Ponaiya, where he says, "I wear shoes because I do not want my feet to be contaminated by Bharat Mata, who has scabies." ये भाषा है जॉर्ज पोनैया की, और Rahul Gandhi was sitting there and actually silently applauding for whatever it is worth. Point number 2, you know, let us speak about what Maulana Madani said. Maulana Madani said that PFI is not an action. PFI is a reaction to an action because successive governments have been anti-Muslim. That is why PFI came into existence. Now, I want to ask Mr. Madani, through your show, one simple question. Everybody who has a basic understanding of politics knows that PFI is a reincarnation of SIMI. When was SIMI set up? SIMI was set up in Aligarh in 1977. When did Popular Front of India come into existence? It came into existence in 2006. Who banned SIMI?
But, please let me finish, Lokesh, I did not heckle you. While Popular Front of India came into existence in 2006, after the formation of Bajrang Dal, which came into existence in 1984, if you actually go back in time, and if you acknowledge the fact that PFI is a reincarnation of SIMI, SIMI came into existence in 1977, way before Bajrang Dal in 1984. So it is not a reaction to an action. Please ask Mr. Madani, SIMI को किसने बैन किया था? It was the Atal Bihari Vajpayee government on 26th September 2001. And who actually said that SIMI is not a communal form? It was the Congress government in 2006. Thank God, Supreme Court Chief Justice K.G. Balakrishna again banned the SIMI in August 2008. यदि कांग्रेस पर छोड़ा होता तो today's SIMI would be a flourishing outfit, and it was the Modi government which banned the PFI in September 2022. The Congress was in power for 56 years. You chose to do nothing. You actually are in alliance with the political outfit of the PFI, the SDPI. You were in alliance with them in the 2018 Karnataka course, and this time SDPI was to contest in 100 seats. No, I am coming to you. Mr. Jindal, you will get a chance to respond. I am coming to you. The SDPI, Pradesh, is on record saying, Abdul Majid, the head of SDPI in Karnataka, says, we wanted to contest on 100 seats, but G. Parameshwara, the Congress senior leader from Karnataka, came to us with four hands and said, please don't contest on 100 seats, contest only on 16 seats. Okay, so Lokesh, now respond to what Sanju has said, then I am bringing in Mr. Bansal on the larger question, because Mr. Madani is linking this to 2024. He says if you want support in 2024, you must fulfill the promise in 2023. Lokesh Jindal, quickly. Sanjay ji, first of all, whenever you are putting forward a claim, please come out with a reliable basis to support it. You cannot give some stray statements and claim that Congress is supported by SDPI or vice versa. When you say that Congress is supported by SDPI, do you have any basis to prove this? Tell me. Any form of any meeting, any agreement, anything to support this particular claim? Which leader went to meet SDPI? On what basis are you saying this? Tell me. Now, and secondly, when you say that Congress is supporting PFI or certain SIMI and all these things, please do not make loose comments on a national television. This is not a loose comment. Did I ever? No, madam, please. It's very serious. The Congress has been in an electoral alliance with the SDPI. SDPI is the political wing of the PFI. Madam, you should ask Rahul Gandhi to not have loose alliances. You should ask D.K. Shiv Kumar to not have loose alliances. You should ask Siddaramaiah to not have loose alliances. Okay, let's not get personal here, please. Let's come back to the larger question that we are addressing and discussing. 1 minute. Vinod Bansal, no, 1 minute. Mr. Jindal हो गया. Mr. Bansal, मदनी साहब ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में सपोर्ट चाहिए कांग्रेस को, तो 2023 की जो उनकी प्रॉमिस है उस पे आप डिलीवर कीजिए, फुलफिल कीजिए. 2023 का क्या प्रॉमिस है उनका? बजरंग दल को बैन करेंगे. देखिए, मौलाना मदनी ने जो कहा ना, उसके 3-4 पॉइंट हैं. एक तो मौलाना मदनी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है. अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे. तो मैं कहना चाहता हूं, मौलाना मदनी, मुस्लिम राष्ट्र के जो जमाने लद गए 1947 में, हमने एक नहीं 2 मुस्लिम राष्ट्र बना दिए, 2 मुस्लिम देश बना दिए. और उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक ही सपना था कि जो डिवीजन है तभी कंप्लीट होगा जब सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और सारे हिंदू भारत में आ जाएं. लेकिन ये कांग्रेस के कुकर्मों के कारण वो नहीं संभव हो पाया. शायद मदनी जी उसी के लिए रो रहे थे. और दूसरी बात यह है कि ये जो भारत का डिवीजन हुआ वो भी अनफॉर्चुनेट था, वो भी कांग्रेस के कुकर्मों का नतीजा था. ये सारे देश ने देखा है. तीसरी बात यह कि मौलाना मदनी को ये समझना चाहिए कि आखिरकार ये जो हिंसा और आतंक के बल पर आप कब तक अपनी जमात को चलाते रहोगे? आखिरकार पैगंबर के नाम पर और इस्लाम के नाम पर कब तक आतंकवाद के अड्डे चलाते रहोगे और खंजर घोंपते रहोगे लोगों के मन में? और आप मुझे बताइए कि ये जो सरतन से जुदा की गैंग है उस पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे क्या आप मुझे बताइए कि ये मौलाना मदनी कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए 70 साल पहले. अरे भाई, इसका जन्म 40 साल नहीं हुआ अभी तक, उसको 70 साल पहले बैन कर देना चाहिए. इनके दिमाग पर तरस आता है.
प्रणय जी, मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो है ना, कैसे सदर बना दिए, जैसे जैसी जमात है वैसे उसके सदर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इनको कम से कम अपने अंदर के अंतरात्मा में झांकना चाहिए। और आप देखिए कि जिस तरह से इस्लामिक जिहाद की ओर इस मुस्लिम यूथ को ये भड़काने की बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से राम मंदिर के ऊपर उन्होंने छीटाकशी करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को जो है एक चैलेंज करने की कोशिश की है, ये बहुत गलत प्रेसिडेंस उन्होंने सेट किया है। गलत आप देखिए कि ये इस्लामिक यूथ को भड़का करके आखिरकार विनोद किधर ले बंसल जाना जी, चाहते गलत हैं। प्रेसिडेंट तो लोग बोल रहे हैं कि ये जो 2024 से लिंक कर रहे हैं वो भी एक डेंजरस प्रेसिडेंट है कि अगर आप बजरंग दल को बैन करेंगे तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप जब अपनी बात कह रहे थे और जब संजू वर्मा अपनी बात कह रही थी, आसिफ सुहेल मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर सुहेल, व्हाई वर यू स्माइलिंग? सर देखिए, जो मदनी साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस, सबको बैन करना चाहिए। ऐसी कई तंजीमें हो, चाहे वो पीएफआई हो, जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे और भारतवासियों के बीच में विभाजन की। चलिए मेरी बात खत्म करनी। ये लोग कई आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। नांदेड़ जैसी जगह पे बम बनाते हुए पकड़े गए, मस्जिद के ब्लास्ट में पकड़े गए। तो देखिए, आपको चाहिए सोचने की जरूरत है। आप एक तंजीम जो एक कंप्लीट, अरे भाई बात तो खत्म कर, क्यों इतना चुरका लग रहा है? क्यों चुरका लग रहा है इतना? बात तो सुनिए, दम नहीं है क्या? एक नागपुर की स्क्रिप्ट लाकर यहाँ पर बैठ के नाचते चले। ऐसे ये बात, ये दम की बात नहीं है, यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा। एक मिनट कौन है भाई? मिस्टर बंसल, उनको बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास, उनको अपनी बात रखने दीजिए। और ये सरतन से जुदा की गैंग लेकर के चलने वाले कौन लोग हैं? आसिफ सुहेल, मेक योर पॉइंट। सर ये गैंग्स ऑफ नागपुर अपनी एक स्क्रिप्ट लाकर सबको एक गुमराह करने की कोशिश की। मैं यही बोलना चाह रहा हूं, बराबर बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, जो पीएफआई जो भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे उसको बैन करना चाहिए। देखिए, नहीं, इसको वही बोल रहा हूं ना, ये अपना एक एजेंडा लेकर आकर एक कम्युनिटी को टारगेट। गैंग्स ऑफ नागपुर आपको समझना चाहिए। लोकेश जिंदल इज फ्रॉम नागपुर। लोकेश जिंदल, आर यू पार्ट ऑफ द गैंग्स ऑफ नागपुर? What gang is he talking about? आपने बहुत गलत, आपने हमारे शहर को बहुत गलत चीज सर, ये इजाजत नहीं। आप में अगर मेरी बात सुनने का दम नहीं है, देखिए शब्द वापस लेने बोल रहे हैं क्योंकि लोकेश जिंदल इज फ्रॉम नागपुर। मैं अब उनको बुरा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, दम देख लिए। Okay, let's get serious. 1 minute. आप जवाब Now, नहीं दे Mr. सकते हो Ratan ना, Sharda, मेरे सामने we have a मत बैठिए। situation like this. Okay, 1 minute, gentlemen, 1 minute. Mr. Sharda, we've all, discussed at length about Congress's manifesto promise of banning Bajrang Dal. Many leaders did a U-turn, said, we never said this. Complete my point. No, I got the drift of the point that you were trying to make. Sir, अब बोल दिया आपने, और कितना बोलेंगे अब? Mr. Sharda, now आसिफ सोहेल, लोकेश जिंदल, हो गई बात, तो आप भी उन्हीं का साथ दे रहे हो। फिर मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ। आप गैंग्स ऑफ नागपुर बोल रहे थे, आई वेंट टू लोकेश जिंदल, इनवाइट कर रहे हैं, तो बोले आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सर उनको बोलने दीजिए ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है मिस्टर सोहेल, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आई एम ओनली, तकलीफ की बात एम आई नॉट एंटाइटल्ड टू ब्रिंग इन मिस्टर शारदा। वो तो बोल रहे हैं ना इस्लामिक, नहीं सर, आपको जब तकलीफ नहीं हुई, वो इस्लामिक आतंकवादी बोल रहे हैं, जिहादी बोल रहे हैं। आपको जब तकलीफ नहीं हुई, नहीं, मुझे आप जो बोल रहे हैं उससे भी तकलीफ नहीं हो रही है। आप दोनों अपनी बात रखिए सर। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आसिफ सोहेल समझ सकता हूँ मैं। आपको आप ज्यादा समझ रहे हैं, आपको जो समझना चाहिए आप वो नहीं समझ रहे। ओके, देखिए मिस्टर सोहेल, इज देयर एनीथिंग मोर दैट यू वांट टू ऐड? कहा हूँ सर, मैं सिर्फ जुल्म सहने वाला हूँ सर। कोई जुल्म नहीं हो रहा है, आपका माइंड म्यूट नहीं किया हमने। अब आप देखिए, विक्टिम कार्ड, आरएसएस हो, वीएचपी हो, कोई भी रहने दो। आसिफ सोहेल, व्हाई आर यू प्लेइंग विक्टिम ऑन द शो? आपके साथ क्या जुल्म हुआ बताइए? क्या जुल्म हुआ आपके साथ? नहीं, क्या जुल्म हुआ है? क्या जुल्म क्या हुआ आप पे? सर अरे तो हमें तो मॉब लिंचिंग की सर, हमें तो मॉब लिंचिंग की है। हलाल और हराम के ऊपर मारा गया, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। मिस्टर सोहेल, 1 मिनट, आई एम नॉट अलाउइंग, 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, ये मॉब लिंचिंग, नहीं 1 मिनट, ये स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हैं मिस्टर सोहेल। 1 मिनट, फिर भी रहेंगे मिस्टर सोहेल, 1 मिनट सर, लिसन टू मी। ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स आप बोल रहे हैं, मॉब लिंचिंग, क्या मॉब लिंचिंग एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ होती है? पालघर में हुआ था, और क्या था वो? कौन सा लिंचिंग था वो?
ऊपर से लोग गिरे थे साधुओं को मारने के लिए। क्राइम होता है। तो फिर अभी आप बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग, फिर आप जुल्म की बात कर रहे हैं। नाउ यू आर सेइंग क्राइम इज क्राइम। मिस्टर सोहेल, यू मेक अप योर माइंड। इफ यू आर हियर ऑन द शो टू प्ले विक्टिम, तो आपके नाम पे जो फ्लिप हो रहा है आसिफ सोहेल पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसको कर देता हूं मैं विक्टिम। इफ यू वांट दैट आई विल डू इट। मिस्टर सोहेल, नाउ डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड नाउ प्लीज। मिस्टर सोहेल प्लीज, बराबर। No, be reasonable in what you are saying, please. अगर आपको तकलीफ हो गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगर आप ऐसी उठपटांग बातें करेंगे तो ये तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज। क्या जुल्म हो रहा है आप पे? अरे हाँ सर, तो दिखेंगे ही ना, सच्चाई तो उठपटांग ही दिखेंगी। नहीं तो जुल्म क्या हो रहा है बताइए ना। दिखेंगी ना सर आपको। जुल्म क्या हो रहा है आसिफ सोहेल, क्या जुल्म हो गया आप पे? अरे सर, आपका चश्मा नहीं देख पा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये लीजिए, मैंने चश्मा हटा दिया, बताइए आप बताइए। अब मैंने चश्मा भी हटा दिया, बताइए। बोलिए। नहीं आप बोलिए। नहीं आप बोलिए, क्या जुल्म हो रहा है आप पे? कोई जुल्म नहीं हो रहा है, कोई जुल्म नहीं हो रहा है आप पे आसिफ सोहेल। यू रन आउट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक। मिस्टर शारदा, अमेरिका, Mr. Sharda, it began with the Congress manifesto promise. Look where it has reached. Mr. Madani is now linking this to 2024 polls. Organization in the world has clearly certified. Can you keep quiet? Can I speak? Then I have come very late in the debate. You should also say कि आप भी, आपके साथ जुल्म हो रहा है। आसिफ सोहेल, अब उनके साथ मत जुल्म कीजिए, उनको बोलने दीजिए। See, first of all, the people. It is very clear that Madani is talking as a pound of flesh, which has been promised by Congress. Point one. Point two, it is very interesting to note that the first party to call for ban of RSS in 1947 was Muslim League. It was not Congress, it was Muslim League, then Congress. And when the ban was imposed by Congress on some flimsy pretext, it was welcomed first of all by Pakistan. So you can understand the background. Flimsy pretext? Coming to more serious issue, these are the people, these Madani type people, this Congress, this Communist Party, who supported unanimously a resolution in Kerala Assembly to give the other namesake Madani, Coimbatore blast chief accused, to be given bail because poor chap has grown old. And everybody, including Congress, Communist Party, Muslim League, supported the resolution. Today they're talking who is terrorist. Sir, those who burned the house of Dalit Congress MLC. अरे मैंने आपको टोका नहीं था, जिंदल जी दया करिए मेरे पे। मैंने आपको टोका नहीं था, बता रहे हैं आप, मैंने आपको टोका नहीं था। आप मुझे चैलेंज करिए कि मैंने जो कहा गलत है। क्या कांग्रेस सपोर्ट नहीं किया था मदानी के बेल के लिए? बताइए ना, बताइए गलत था कि सही था। टोका ना मुझे, आप बताइए मदानी की बेल के लिए आपने यूनानिमसली पास किया था कि नहीं किया था? नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, बीच में बोलिए मत। He is asking you a direct question, Mr. Jindal. Do you want to answer that? मत करिए, जिंदल जी आपको शोभा नहीं देता। मैंने आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा, मदानी की बेल के लिए आपने यूनानिमस रेजोल्यूशन पे आपने वोट डाला था कि नहीं? आप बिना मतलब मुझे टोक रहे हैं। आप बताइए, आपको एक सवाल की आपको मिर्ची लग गई। आप आरएसएस बीजेपी बजरंग दल में दुनिया भर के फोड़ते रहेंगे पाप, लेकिन आपको कुछ है वो मिर्ची लग जाती है। आपकी आवाज मेरे से बड़ी होगी, आप जवान होंगे, लेकिन मुझे बोलने का हक है ना। मुझे बैन नहीं किया किसी ने। Let him speak, Mr. Jindal. I'll come back to you. Let him finish his point. I'll come back to you. Atikur Rahman, let's learn from Atikur Rahman. He's patiently waiting for his turn. देखिए उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। All extremist secularists have one point to stop RSS Bajrang Dal Sabha, because they know this is the first line of defense for Hindus. Now, these are the same people in Karnataka who suspended a teacher in Karnataka because he forwarded a critical post against the chief minister. He was suspended. We have these people who, now talking of RSS BJP, the murderous attack of RSS people, BJP people, including communists. Who is doing all the accused are PFI people. The people who burned down the house of a Dalit Congress MLC, for which Congress kept quiet in Bangalore. The poor chap was BJP, not BJP, it was Congress MLC, whose nephew or somebody put a post on Facebook, his house was burned, riots for a country, same PFI. These people compare this to the patriotic Bajrang Dal, which has always stood by the country. And Mr. Jindal did one, criticize Madani. Remember this guy, Jamaat-e-Islami guy, Jindal justified Congress. He did not condemn or criticize Madani for speaking out of turn, speaking stupidly and stooping venomously. Let's put Mr. Jindal on test. Mr. Jindal, will you take a stand against Mr. Madani? Internationally, is there RSS where every year? Let him answer that. Mr. Sharda, that's a valid point. Let him answer that. So nothing is above law. When we have a law today which makes it illegal
to speak ill about the other community, please understand that over here, whether it is any organization, any community for that instance, whether it is Mr. Mr. Jindal, when Pastor Ponaiya was speaking, and sow seeds of discord. 1 minute. When Mr. शुद्धिकरण के लिए जरूरी है. When Pastor Ponaiya was speaking, was it मोहब्बत की दुकान? जिहादी क्यों खड़े हैं? Sir, Pastor Ponaiya, if his statement is illegal, the center... No, you tell me. The comments made by Ponaiya, the comments made Mr. Jindal by Ponaiya, what do you make of those comments first of all? No, forget legal, illegal. You tell me, you tell me whether you endorse those comments. Going and taking due cognizance of it? Or any other police? No, tell me, if Mr. Jindal, I'm asking you a straightforward question. अब इससे सीधा सवाल क्या हो सकता है? Pastor Ponaiya ने जो बोला, do you endorse that? Absolutely not. If any person speaks ill about other organization or religion or about the country or derogates any particular symbol, that is not acceptable. No, even this guy. See, listen, Ratanji, you all want to malign image of Rahul Gandhi ji. You somehow want to create certain issues out of it. Now don't say that RSS sent Mr. Rahul Gandhi to meet Ponaiya. Any form of a statement which puts the country or the idea of India in a bad light. No, I am glad, Mr. Jindal, that you at least condemn the comments made by Mr. Ponaiya, but does that... Anti-national. However, he is the most patriotic Indian that we have. Nobody is questioning his patriotism, Mr. Jindal. Nobody is questioning. Nobody is questioning his patriotism. We are not on that. Today we are talking about Mr. Madani and his offer to the Congress that if you deliver your 2023 promise, we will support you in 2024. Sanju Verma. Promise that it has. May I come in, please? Yes, Sanju Verma. Okay. You know, I'm glad that the point I raised about Pastor George Ponaiya, at least it has been condemned by one Congress, panelist here, which is good going. I just have this to say, Pranesh, Zamir Ahmad Khan, who I believe is also amongst the 8 shortlisted ministers, he is on record saying that we have demanded 10,000 crore extra allocation to be made for minorities over and above what the Congress promised in its Karnataka manifesto, clearly drawing a line about the fact that Muslims in Karnataka want to be mollycoddled as far as Zamir Ahmad Khan's statement goes, and he's not some small leader, he's the Congress MLA from Chamarajnagar. Point number 1. Point number 2, I will tell you how Rahul Gandhi is a big hypocrite when it comes to free speech. He says, मैं मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं. But in January 2022, barely a little over a year back, Hamid Ansari, who was Vice President of India for 2 terms and has been a career Congress person, he attended the Indian American Muslim Council online session saying that Muslims have no rights in India. And do you know IAMC ka chief founder kaun hai? It is a man called Sheikh Ubaid and Jamaat-e-Islami. Jamaat-e-Islami, by the way, is a terror outfit as per the United Nations. What was your Hamid Ansari, a Congress leader, attending an online web session of the IAMC in Jan 2022? Iska jawab do. Why was Hamid Ansari? No, he says Mr. Jindal is saying don't link Congress to one individual. Supreme Court. Hamid Ansari was the Vice President of India. Why should I not link him to the Congress? You link every Tom, Dick and Harry to the BJP. Why should I not link Zamir Ahmad Khan to the Congress? Absolutely wrong. Why should I not link George Ponaiya, who was the chief guest in Rahul Asif Sohail is also saying something, but let me bring in Atikur Rahman. Atikur Rahman sahab, sorry, I am coming to you this late in the show. 1 minute, Mr. Jindal, 1 minute. Atikur Rahman, Mr. Madani ने जो कहा है, आप उसको कैसे देखते हैं सर? वो कह रहे हैं कि अगर बजरंग दल को आप बैन करेंगे तो हम 2024 में आपको सपोर्ट करेंगे. The question is to me. No. Atikur Rahman.
Pranesh, I think if we at all want to learn some lessons from the Karnataka outcome, the people have rejected communal politics. People want to vote for the basic essentials, what is needed to humanity and empower India. If we can learn this, it's good for all of us. No, banning Bajrang Dal is good for humanity. Like 1 minute, Atikur Rahman, banning Bajrang Dal is good for humanity. All organizations, yes, Pranesh, good question. Good question. All organizations, if they are not acting communally, they can be an asset to India. I am against banning any organizations. Be it the PFI, be it the Jamaat-e-Islami, be it there you go. You are against the banning of PFI. All organizations you are can be against the banning of PFI, Mr. Atikur Rahman. You are against the banning of PFI that wants to establish an Islamic caliphate. Because so far, never, you cannot prove until, eternity you won't be proving that PFI ever wanted an Islamic state. The government has banned it, sir, that and the charge against in their online this thing. 2024 document never mentions Islamic State. Should the ban on Simi be overturned? RSS in the Atikur Rahman, should the ban on Simi be overturned? Will that be good for humanity, society, it's harmony? A subjudized matter. Will that bring it? No. Will that bring harmony? PFI will come clean. Should we revoke? Forget PFI. PFI will come clean. Pranesh, sir, I'm talking about Simi. Should we revoke the ban on Simi? Should we bring it into mainstream? Bring them round the table. Talk to them. Oh, talk to the Simi. Talk to the talk to Simi. Talk to Simi. Talk to the Lashkar. Talk to the Jaish-e-Mohammed. Keep talking. Keep talking. Let the Atikur Rahman, आप बोल क्या रहे हैं, sir? Do you realize what you're saying? They will keep on attacking and you will keep on Asif Sohail, even Asif Sohail is shocked. Even Asif Sohail is shocked. वो हंस नहीं रहे हैं, उनकी हंसी उड़ गई है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि reverse the ban on Simi, उनको टेबल पे लाइए. Yes. Pranesh, you are making बोलिए. communal with the people of. I am making things communal and you are making it. No. You are making it peaceful by asking me to revoke the ban on Simi. You want talks with Simi now? All Indians can be an asset. Why don't you realize? Banning PFI, banning Simi, banning any organization, turning them terrorists. Sir, Mr. Atikur Rahman, you have stopped short of saying that give Bharat Ratna to... No. 1 minute. Let me extend this logic, sir. 1 minute. Atikur Rahman, sir, suniye. 1 minute, Mr. Rahman. 1 minute. But let me extend this logic. Mr. Rahman, let me extend this logic. No. In the interest of peace, why don't we confer Bharat Ratna on Zakir Naik? वो पीस बना रहेगा, पीस हार्मनी, पीस टीवी and all that. Never. We will not recommend a parliament seat to any terror accused. Only the BJP has the monopoly to do it. They can take terror accused Pragya Singh Thakur to parliament. बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है ना, जो अपना संजू वर्मा करने की, वो उसमें अगर जाएंगे तो बराबर मिल जाएगा पद्मश्री. Should I make a comment now, please? Pranesh. Thank you. Pranesh, I challenge, some of the Muslim panelists here because they have tried to bring a false equivalence between RSS, VHP, Bajrang Dal and a terror outfit like the PFI which was banned under the UAPA last year. I will just say this. I did not interrupt you. Now please hold your horses. Very crushing defeat. अब आपने बोला है सर कुछ तो अब दूसरी तरफ का भी तो सुन लीजिए. You are ready to talk to Simi, speak to Sanju Verma also. उनसे भी बात कर लीजिए. अरे सर आप तो पूरा ही तो can you ask this man to keep quiet? सर दूसरों को Please भी stop blabbering. आसिफ सोहेल आप बाबा बोलिए, जुल्म हो रहा है मुझ पे. संजू वर्मा, मेक योर पॉइंट. मिस्टर बंसल आ रहा हूं मैं आपके पास. Mr. Rahmani, I did not interrupt you, please. Let Sanju Verma make. हमें अगर बोलने देंगे सोहेल साहब आपके पास भी आता हूं. संजू वर्मा को खत्म करने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास. इसलिए तो नहीं दे रहे हो ना आप. जुल्म की इंतहा नहीं होगी, मैं आ रहा हूं आपके पास. ठीक है मत कीजिए आप. ओके आइए. प्रणेश, मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि परपेट्रेटर स्टार्ट्स प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. पहले सब कुछ कर लेना, उसके बाद रोने का भी हक आप ही को है.
ये तो गजब हो गया। अभी मैं कुछ कहना चाहती हूं। I will, give some examples, and I challenge the other two panelists who have been putting up a brave case for the PFI to name 10 people that Bajrang Dal may have killed. Let me finish. The witnesses, why Ayush Soni, Pranesh, I refuse to speak if this man continues behaving like a don't fool. refuse to speak, Mr. Rahman. उनको बोलने दीजिए सर. Show some courtesy. threatening the witnesses in the Maledon blast case. बोलने दीजिए अतीकुर रहमान साहब, उनको बोलने दीजिए प्लीज. I'll have to lower your fader, sir, please. मैंने सुनी है, अभी आपकी सुनने की बारी है. थैंक यू. प्रणेश, प्रवीण नेट्टारू, बेल्लारी इन कर्नाटका, आयुष सोनी इन भीलवाड़ा, निशांत राठौड़ इन भोपाल, चंदन गुप्ता इन कासगंज, मुकेश तिवारी इन रेवा, अंकित झा in Sitamarhi, again Praveen and Prashant Pujari in Karnataka, Sachin Gopalan in Kannur in Kerala, Srinivasan in Kasargod in Kerala, and Bandhu Pal in West Bengal, along with his 8-month pregnant wife. What is common to all these victims? They were brutally hacked to death by a radical Islamist ideology which actually applauds terror firms like the PFI. You name 10 people that Bajrang Dal has killed. Bajrang Dal has not Let him name 10 people. anyone. Atikur Rahman, do you have a list? Asif Sohail, do you have a list? मैंने आपको 10 नाम दिए, आप 10 नाम दीजिए. आप बजरंग दल के 10 नाम दीजिए because you're drawing a false equivalence between Bajrang Dal and PFI. Asif Sohail, do you have 10 names? 10 नाम है तो पढ़िए अभी. सर देखिए मेरे पास तो होती है लिस्ट नहीं है, मगर देखिए 5 का तो होगा. क्लियरली देखिए, एक तो यह तो बता रहा है, आप बोल रहे थे जुल्म हुआ है, लिस्ट तो होगा जुल्म का. एक तो दारा सिंह का नाम सुनिए सर, सुनिए, एक तो नाम दारा सिंह का बता रहा है, दूसरा जो है सो कर्नाटक के एक मिनिस्टर को मारा है, सो उसके बारे में बता रहा है. सर कई नाम है. आप देखिए, नाम अगर होना है तो पूरा रिकॉर्ड लेकर आएंगे, पर देखिए सर, पर CIA ने क्यों बताया है कि VHP और बजरंग दल एक रिलीजियस मिलिटेंट आउटफिट है? ओके, CIA ने क्यों बताया? विनोद बंसल जवाब देंगे. विनोद बंसल now answering आसिफ सोहेल. आपने सवाल पूछा, विनोद बंसल का जवाब ले लेता हूं. मिस्टर बंसल. प्रणय जी देखिए प्रणय जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि अब मदानी ने ये बात कही कि भारत हिंदू राष्ट्र की अगर कोई बात करेगा तो कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर सकता है. मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो ओरिजिनल संविधान था, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर किसका चित्र था? कोई पैगंबर मोहम्मद साहब का तो नहीं था, राम दरबार का चित्र था. क्या पूरे संविधान में, मैं चैलेंज करके कहता हूं, इतने सारे विद्वान बैठे हैं आपके पैनल में, क्या कोई बता सकता है पूरे संविधान के अंदर कहीं सेकुलर वर्ड था क्या बाबा साहब के संविधान में? नो, नॉट एट ऑल. दैट सेकुलर, ये सेकुलर वर्ड जो है, इट वाज इन्फिल्ट्रेटेड. Okay, I'll have to move on to another story that we are discussing and debating. I'm out of time on this one. I thank all of you for joining us. Some of you stay on and